अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाक बंगला रिएक्ट। मेरा नाम अहमद अब्बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम सॉरी कहते हैं आप भाइयों से, बहुत ही ज़्यादा माजरत ख्वाह हैं कि हमें किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, थोड़ी सी परेशानियों की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए हमें दुख है इस बात का। तो सलमान भाई थोड़े से बिज़ी थे, इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये भी चले गए थे और मुझे भी अपना पर्सनल थोड़ा बहुत काम था, जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हम आए हैं, हमने सोचा कि अपने भाइयों से सॉरी भी करेंगे, तो फिर से उनके लिए वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू करेंगे। आप में से कुछ भाइयों ने पूछा भी था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो आई थिंक कि किसी किसी को हमने तो जवाब दे पाए हैं, किसी को हम जवाब भी नहीं दे पाए, और जिनको हमने जवाब नहीं दिया उनसे भी हम सॉरी कहते हैं। और अब से इस वीडियो से अब आगे सिलसिला स्टार्ट हो गया है हमारा। अब आपको डेली हमारी वीडियो मिलेगी। तो जैसे आपका पहले प्यार आपने दिखाया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपने कमेंट्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, आपने बहुत भरपूर साथ दिया, हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और जैसे तो हम अभी आगे हैं तो आगे भी साथ देते तो रहेंगे। उम्मीद है कि आप अभी भी उससे डबल प्यार दिखाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, और कमेंट्स करके हमें वीडियोस जैसे भी किया करें, और हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी आप हमें बताया करें। और अगर हमारी वीडियो में कुछ खामियां हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताया करें, ताकि हम अपनी जो कमियां कोताहियां हैं उसको दुरुस्त करके एक अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बना पाएँ। तो आज हम सबसे पहले तो सलमान भाई आज बता दें कि क्या टाइटल है, आज क्या देखने वाले हैं हम। टाइटल है भाई 10 सरप्राइजिंग बांग्लादेश डिस्कवरी। तो ये क्या होगा? इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, सही। 10 सरप्राइजिंग है हमारे लिए क्या मतलब सबके लिए सरप्राइज होंगे, सबके लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो और ज़्यादा हैं, क्योंकि हम अभी देखने जा रहे हैं इसको कि क्या होता है वीडियो में। हम अपना रिव्यू जो है वो वीडियो के बाद ही देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि हमें जो मतलब वीडियो में देखने को मिलता है हम वीडियो के बाद ही बताते हैं, दे सकें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू। सही बात है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, और चलते हैं वीडियो की तरफ। In this episode, I've compiled a list of surprising animated discoveries and inventions of those who are either native to Bangladesh or are of Bangladeshi descent. Hey guys, what's happening? Welcome back to FTV Facts. Leroy Kenton here. And now these discoveries and inventions, they're from a variety of fields, including science, tech, and finance. So with that said, let's just jump in. We have number 10 coming up, and that is YouTube. This one is really, really surprising. Yeah, you're watching this video right now on YouTube, largely due to the efforts of Jawed Karim, and he's of Bangladeshi and German descent, and he's a software engineer and internet entrepreneur who is also the co-founder of YouTube. Now, he uploaded the first video on YouTube, and it's titled Me at the Zoo, and it's actually still up to this day. YouTube was launched on February 14th of जी, बांग्लादेश किसी से कम नहीं है सलमान भाई। सबसे पहली वीडियो इसने अपलोड की थी by Google for $1.6 billion. Number 9 is the WILLIS Tower. This was a joint invention, so to speak. Bangladeshi-American structural engineer Fazlur Rahman Khan and Colombian-Peruvian architect Bruce Graham, they designed the WILLIS Tower, which was formerly known as the Sears Tower. Now, it's 108-story or 1,450 feet, which works out to be 442 meters tall skyscraper, and it's located in Chicago, United States. At the time of completion in the year 1974, it became the tallest building in the entire world. It was also the tallest building in the Western Hemisphere for about 41 years. And this is until the new One World Trade Center surpassed it in the year 2013. Number 8 brings us the tube, but not YouTube, but the tube. So let me explain. That's a structural engineering term. And the tube system really is a concept that's based on the idea that a building can be designed to resist lateral loads by designing it as a hollow cantilever at an angle of 90 degrees to the ground. This system was first introduced by Fazlur Rahman Khan. Of course, he's the same Bangladeshi-American structural engineer who designed the WILLIS Tower, which we just talked about. Number 7 brings us microfinancing. The modern use of the expression microfinancing goes back to the 1970s, which was founded by microfinance pioneer Muhammad Yunus. He was starting to form
the modern industry of microfinancing. Now, this approach of microfinancing was institutionalized by UNIS in the year 1976 with the foundation of the Grameen Bank in Bangladesh. Microfinancing is a financial service and assistance to people and companies who lack access to typical banking and related services. SONO arsenic filter is the discovery and invention that comes in at number 6. A SONO arsenic filter is a two-bucket system developed to reduce chemical compounds by passing the water through coarse sand, composite iron matrix known as CIM, brick chips, and wood charcoal. Abdul Hassam, who was born in Bangladesh, is the inventor of the SONO arsenic filter. There you go, guys. Now, halfway in at number 5, we have the SONALI bag, also known as the golden bag. This is a cellulose-based biodegradable bioplastic alternative to plastic bags, and it was developed by Bangladeshi Mubarak Ahmad Khan. Polythene bags were banned in Bangladesh in 2002 because of the environmental concern. Now, Mubarak Ahmad Khan, who was a scientist at the Bangladesh Atomic Energy Commission, in collaboration with other researchers from Bangladesh, developed a range of material, and the SONALI bag came from that. Moving on to number 4, we have the CRESCOGRAPH. This is a term that I never heard of before. But a CRESCOGRAPH is a device for measuring the growth in plants. It was invented in the early 20th century by Jagadith Chandra Bose. And he was a biologist, a physicist, a botanist, and a writer, and was originally born in Behrampur, Bengal Presidency, British India, now known as Munshinganj, Bangladesh. And his CRESCOGRAPH uses clockwork gears and a smoked glass plate to record the movement of the tip of a plant or its roots. It can record plant growth, magnifying a small movement as much as 10 million times. The horn antenna comes in at number 3. Now, a horn antenna or microwave horn is an antenna that consists of a flaring metal waveguide shaped like a horn to direct radio waves into a beam. Now, one of the first horn antennas was constructed in the year 1897 by Bengali Indian radio researcher Jagdith Chandra Bose, hear that name again, in his pioneering experiments with microwaves. This guy literally revolutionized the world. An advantage of the horn antenna is that since they have no resonant elements, they can operate over a wide range of frequencies and wide bandwidth. Now, number 2 brings us the focus impedance measurement. Focus impedance measurements, known as FIM, is a recent technique for quantifying the electrical resistance in tissues of the human body with improved zone localization compared to conventional methods. This method was proposed and developed by the Department of Biochemical Physics and Technology of the University of Dhaka, Bangladesh, under the supervision of Professor Khankar Siddiq-e-Rabbani, who was the one who first introduced this idea. Now, this thing can be really useful for impedance measurements of large organs like the stomach, the heart, the lungs, and it can also be used in other fields that perform impedance measurements. Now, ending off this list, we have number 1, and here we look at crystal radio. A crystal radio receiver, also called crystal set, is a simple radio receiver, and it's very popular in the early days of radio. It uses only the power of the received signal to produce sound, needing no external power at all. Crystal radios are the simplest type of radio receiver and can be made with a few inexpensive parts. Crystals were first used as a detector of radio waves in the year 1894 by Jagadith Chandra Bose. There's that name again, guys. Although radio has developed far beyond the early days, this man contributed to having radio sets accessible and affordable to a lot more people. So there you have it, guys. This concludes our episode on 10 surprising Bangladeshi discoveries and inventions. Thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoyed it. As always, leave your thoughts and comments down below about anything mentioned in this episode. Thanks for hanging out with me in another episode here on FTD Facts, and I'll see you in the next one. तो सलमान भाई क्या कहना चाहेंगे? यार एक चीज़ जो है ना मुझे सरप्राइज ज़्यादा लगी है। पहला यूट्यूबर बांग्लादेश से था और सबसे पहली वीडियो उसी ने बनाई थी और जूम में बनाई थी। मैंने ये देखा था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि यार वो बांग्लादेश का ही था। तो यार ये बड़े कमाल की और फख्र की बात है कि पहला यूट्यूबर। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि यार काफ़ी सारी जो है ना इन्वेंशन है, उनकी डिस्कवरीज भी है, इन्वेंशन भी है। मतलब ये है कि भी हमने ये नहीं देखा था हमें। हाँ, हमें नहीं पता इस बात का यार, सही बात है। हम यार सीधी बात है, नेगेटिव हमें
पता लग जाती हैं चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जो है ना, सही बात है ना सलमान भाई, नेगेटिव तो मीडिया पे हर जगह पे बंदे बंदे की ज़बान पे होता है नेगेटिव। अगर कोई बांग्लादेश की मतलब बुरी खबर हो या कुछ ऐसी बात हो तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगी, और कोई अगर अच्छी बात हो तो वो वहीं पे खामोश हो जाती है, उसको ज़्यादा नहीं फैलाते ताकि एक कंट्री की तारीफ। आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। सही है। तो इन्वेंशन भी कर रहे हैं। मतलब ये अहमद भी एक मेजर बात बताऊँ आपको, मुसलमान ख़ास तौर मुसलमान को ना अल्लाह ताला ने एक ऐसा नेमत दी है दिमाग की, ख़ास तौर ये ब्रेन की, कि वो सोचता है। सही बात है। और हमें कुरान पाक जो है ना हमारा, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साइंस को मतलब साइंस है ऐसे समझ। सही बात है, मुकम्मल ही साइंस है सर, साइंस है, ऐसा ही है। काफ़ी सारी आयात ऐसी हैं जो साइंस को जो है ना डिस्कवर करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो साइंस निकली भी इसी से, इसी से निकली है, ऐसा ही कहेंगे हम तो। सही बात। इसलिए जो है ना हम मुसलमान, हम अगर चाहें तो बड़े बड़े ये मुसलमानों मुसलमानों को गॉड गिफ्ट है ये। बिल्कुल ऐसा ही ना, ऐसी है। और काफी सारी और बड़े बड़े इनको साइंसदानों को हम टक्कर दे सकते हैं। सही बात, अगर हम फॉलो करें तो, कुरान फॉलो करें तो। नहीं करते तो नहीं करते तो क्या होना है उसका। सही बात है। तो फ्रेंड्स वीडियो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हमें इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।